Hello friends, I'm Irfan and this is Acting for Animation series and today we will block out this animation over here. तो आइए शुरू करते हैं. Okay guys, first thing I want to make a camera for this guy. Let's name it as a cam. इसको हम करीब मूव करते हैं. Select head, F प्रेस किया. हम लोग एक बेसिक कैमरा सेट करते हैं. Let's turn on the save frame over here. इसकी रेजोल्यूशन को एडजस्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे रेंडर सेटिंग में और नीचे आते हैं हम लोग और इधर हम कहते हैं कि हम फुल HD इसको रखना चाह रहे हैं. लेट्स क्लोज दिस नाउ. और अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो सेव फ्रेम है वो फुल HD में नज़र आ रहा है. लेट्स टीयर ऑफ दिस कॉपी. फॉर फेशियल स्टफ आई वांट टू चेंज द फोकल लेंथ टू मे बी 80. इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट. हम इस कैमरे को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको सेटिंग में चले गए एंड देन डाउन देयर हम लोग वी विल गो इनटू डिस्प्ले ऑप्शंस एंड वी कैन चेंज द गेट मास्क इनटू ब्लैक. उसकी ओपेसिटी को हम लोग बढ़ा देते हैं, समथिंग लाइक दैट. शो में जाते हैं, नब्स को इसको ऑफ करते हैं. नाउ वी कैन सी इट लाइक दिस. आई थिंक द फ्रेमिंग इज स्टिल नॉट राइट. हम लोग सेटिंग में जाते हैं एंड देन वी विल लेट्स टर्न ऑन मेंटेन विड्थ एंड हाइट रेशियो एंड वी कैन चेंज इट इनटू HD 1080. yeah, 1920 by 1080. this is what we want. Close this guy. Let's readjust the camera. Maybe something like that. Okay, cool. Now we have our reference viewport over here. Our camera is here और हम लोग perspective में रहते हुए काम करेंगे. We can just select this guy and then we can work on this one. Let's close this now. Or okay, I will use this workspace for my animation. Let's save this by going to workspace. इसको सेव करते हैं. ओके, इसको सेव करने का फ़ायदा ये होगा मैं किसी भी टाइम यहाँ पे आता हूँ और इस वर्कस्पेस को सिलेक्ट कर पाऊँगा तो मैं इसको उसके हिसाब से रीएडजस्ट कर देगा. लेट्स टेस्ट दिस वन. मैं एनिमेशन में जाता हूँ तो वर्कस्पेस चेंज हो गई है, बट इफ आई गो इनटू फेशियल वर्कस्पेस आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट बैक. ओके कूल. लेट्स ट्राई टू हाइड दिस कंट्रोलर्स. अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको की करना. आई विल सेलेक्ट ऑल कीज. सभी कीज को सिलेक्ट करता हूँ, एस प्रेस करता हूँ एंड देन दिस इज माई डिफ़ॉल्ट पोज. यहाँ से मैं पोज बनाना शुरू करता हूँ. हेड को सिलेक्ट करते हैं. दिस गाय इज लुकिंग समवेयर हियर. इसके अलावा इसकी बॉडी भी इन्वॉल्व होगी इसके साथ. लेट्स सेलेक्ट दिस गाय और इसको भी रोटेट करते हैं, मे बी अ लिटिल लेफ्ट. आर्म्स को नीचे लेके आते हैं. शोल्डर सेलेक्ट किए मैंने यहाँ से. I can click on this guy and it will select both of them. इसको कुछ यूं मैंने कर दिया. Maybe I can select this chest controller by clicking this plus sign और इसको थोड़ा सा आगे रखता हूँ यूं. And I can even rotate this guy. Cool. अभी हम फेशियल स्टफ पे नहीं जाएंगे, पहले हम लोग बॉडी को एनिमेट करके देखेंगे. Then we will go into facial. Cool. Let's try to make basic expression. I will select this main controller. यहाँ से मैं hairs को hide कर देता हूँ. I want to see his eyebrows clearly. Cool. Okay, right now this character is looking down, so I will go into face selection. So let's select the eyes and then let's bring it down. And also he is looking far, so maybe इसको दूर मूव करता हूँ. Let's move this guy far. Undo करता हूँ. This is not the right control. Okay, let's select the eyes control. Let's show up
this nerve curves. When I select this eye control, this controller is highlighting. इसका मतलब है कि ये वाला कंट्रोलर यूज़ होगा आइज़ के लिए। अभी अगर इस कंट्रोलर को मूव कर रहा हूँ तो उसकी आइज़ उसके साथ नहीं जा रही। उसकी वजह ये है कि वी हैव टू चेंज इट इनटू एम। अब ये एम को देखना शुरू कर देगा। नाउ वी कैन चेंज this guy like this. Maybe this guy is looking down. Let's bring its upper lid down a little bit. Maybe little right and maybe a little in. We will go into object space और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ भी मूव करते हैं. Let's move this down a little bit more. Like this, and let's add up a little expression over here. Maybe he is like a little sad or something. इनको नीचे ले आते हैं, and maybe we will select overall face and then move this guy a little down. और maybe इसके inner controllers को थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं. Let's bring this eyebrow a little down and up और थोड़ा सा अंदर की तरफ. Something like that. Maybe we can roll this guy like this. And let's break the symmetry of the face by selecting this guy over here और उसमें थोड़ी सी हम लोग symmetry ऐड कर देते हैं. Maybe rotation wise it will be here and upper head उसका कुछ यूँ होगा. symmetry को break करते हैं मज़ीद. Maybe कुछ यूँ होगा. Nice. nose में symmetry लेके आते हैं, थोड़ी सी rotation ऐड करते हैं. And maybe we can select the mouth, उसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव कर देते हैं. Same for the chin, same for the jaw. Chin थोड़ी सी symmetry ले. Let's squish these eyes a little bit. इसको थोड़ा कम, इसको थोड़ा ज़्यादा. Nice. Now we can see this one is much better pose. Let's double check. Maybe we bring the eyes a little right more maybe, और थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं. Tune. And then this guy will go a little right and down. Lower lid a little, not much, but a little bit high up there, a little bit. Yeah. Lip के left corner को थोड़ा left ले आते हैं. Yes. Yeah, now it is looking better. Cool. So I will select all keys and then I will press S. This is our first keyframe. Now I will try to find the second extreme pose. And it is over here, frame number 71. हम अपनी टाइमलाइन को शॉर्ट के हिसाब से छोटा करते हैं. Let's make it 71 over here. Cool. Okay, let's try to make this extreme pose. I will select all and then press S. अगर मैं कीबोर्ड से एंगल कीज को यूज करते हुए दोनों में फर्क देखूं, I can flip into first pose to second pose by selecting angle की. एंगल लेफ्ट और एंगल राइट की को यूज करते हुए मैं दोनों फ्रेम्स को स्विच कर सकता हूं. मैंने सभी को सेलेक्ट किया and then I will press 0 and now the pose will go into default position and I can switch it from first pose to this pose. Let's select the shoulders और इसमें हम देखते हैं कि ओवरऑल बॉडी
रोटेट हुई है हमारी रेफरेंस में, हमारी बॉडी लेफ्ट यहाँ पे कुछ इसकी लाइन ऑफ एक्शन कुछ यूँ थी और ये कुछ यूँ हो गई है, तो we can see the reversal over here. So we can improve this pose over here. We can introduce this line of action. Maybe we can, yeah, something like that. Yes. अभी हमें बॉडी में थोड़ा सा लीन मिल गया लेफ्ट की तरफ. Before that it was straight. Let's try to copy same pose by selecting this guy. इस लोअर बॉडी को सेलेक्ट करते हैं कुछ यूँ, and then we can just copy the same pose over here. यहाँ पे चले गए पहले फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे चले गए, एस प्रेस किया. Okay, cool. And let's try to change that. We will rotate body to the left, and then we will select these guys, and we will try to rotate this like this. और थोड़ा सा lean ऐड कर दिया हम लोगों ने. If I flip it now by using angle key, I can clearly see the difference. I think I rotated much more. Maybe I can reduce that. अगर lower body को देखा जाए तो lower body is looking better. I have to work on head rotation now. तो maybe इसका head कुछ यूँ है. Something like that. Okay. इसके facial पे काम करते हैं हम लोग. So let's open up the eyes. Right now this guy is angry. तो हम लोग brows को नीचे लेके आते हैं कुछ यूँ, and maybe bring these guys a little high, something like that. इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं कुछ यूँ. Yes. Super sweet, super simple. We can even move this guy in a little bit to really break the symmetry. And now we have to select our eyes और उसको हम वापस लेके आते हैं, अपने aim को वापस लेके आते हैं. So this guy is looking somewhere here, and we have to find the directionality of the face too. तो उसको एडजस्ट करने के लिए लेट्स ट्राई टू रोटेट लोअर जा, मे बी कुछ यूँ लेफ्ट साइड पे, एंड देन हेड को हम लोग कुछ यूँ रोटेट करते हैं. इसके आईब्रो को एक को थोड़ा हाई करते हैं, एक को थोड़ा लो रखते हैं. एंड सेम फॉर द आईज, समथिंग लाइक दैट. इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं. Let's bring this guy in and down. I can see कि मेरे cheeks ऊपर आ रहे हैं and then they are pulling up my lower lids. I can bring this guy up. इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं, move करते हैं, something like that maybe. Yes. And then bring this cheeks a little. Sorry. And we can select these cheeks and bring that up. Same for this guy, bring that up. I can do this thing for दूसरे lid के लिए भी यूँ करते हैं. I can clearly see that कि जो lower lid है it is touching with the iris. तो इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, cheeks को move करते हैं हम लोग. Let's bring this guy up and this guy up. And we can even add a little of puff. Let's select the corners और in value के साथ play करके देखते हैं. Let's try to add up 5, which is too much. Let's try to add one value. Yeah, maybe 0.5 is enough. What this guy will do, let's bring up 5. No need to do anything with that. Make it 0. What is this thing?
ओके, सबसे पहले मैं एनालाइज करूँगा कि मेरे ओवरऑल मेरे लिप्स नीचे आ रहे हैं, तो मे बी आई विल सेलेक्ट दिस गाय एंड ब्रिंग इट अ लिटिल डाउन। इसको थोड़ा लेफ्ट लेके आता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ इसको कुछ यूँ, एंड देन आई विल सेलेक्ट द कॉर्नर्स, आई विल ब्रिंग दिस गाय डाउन लिटिल बिट, and then let's play with this value over here, Paka. Maybe I can change it to maybe 0.5. We can also add up by selecting upper and lower lip. I can add up a little puff maybe, and I can add puff into cheeks. Maybe it is too much, 0.5 maybe. It is too much, maybe 0.1 is okay. Yes. I think इसके जो लिप्स हैं वो ओवरऑल ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ नहीं आएंगे, बिकॉज द आईब्रोज दे आर कंप्रेसिंग डाउन, तो ये ऊपर की तरफ इनको आना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। इसके नोज पे काम करते हैं, लेट्स ब्रेक द सिमेट्री, लेफ्ट नोस्ट्रल को ऊपर करते हैं एंड देन ब्रिंग दिस गाय अप, and maybe bring these corners up like this. अभी जॉ को सेलेक्ट करते हैं, लिप्स को कर देते हैं सील और इसको ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं। यस, select this guy over here and then maybe bring this guy like this, and we can even rotate. Yes, this pose is much better. I feel like a upper lid still need a little bit of work. Yes, somewhere here. Now it is looking much better, and we can polish this guy. This guy is too straight over here. Let's select this guy and we can just try to make it a little up, and yes, maybe over here is nice. अब हम दो पोजेस को फ्लिप करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू फ्लिप दिस। तो अभी रेफरेंस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने दो एक्सट्रीम पोजेस को हमने डिफाइन कर दिया। लेट्स फ्लिप दिस गाय एंड वी कैन सी आवर एक्सट्रीम पोजेस रेफरेंस में भी और हमारी एनिमेशन में भी। वेरी नाइस। ओके, अब हमें मजीद पोजेस चाहिए। लेट्स सेलेक्ट ऑल ऑफ देम। ओके, लेट्स सेलेक्ट ऑल ऑफ कीज एंड उसको एस प्रेस करते हैं। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आवर ब्रेकडाउन पोजेस। तो आई थिंक we really need this pose over here. Let's go on frame 22, S press करते हैं यहाँ पे, and then this pose is favoring, यहाँ पे हमने की किया, and right now I am in R2 tangent. I can go into settings and double check that, and it is fine for me. I can still work on the breakdown. अभी ये वाला पोज फेवर कर रहा है हमारे नेक्स्ट पोज को। ओके, दिस वन वाज एक्सट्रीम पोज। नो, आई विल ट्राई टू फाइंड माय स्टोरी टेलिंग पोजेस। तो लेट्स, आई थिंक दिस पोज इज सुपर इम्पोर्टेंट। आई हैव टू मेक दैट पोज। आई विल गो टू फ्रेम 18 और यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स रोटेट दिस गाय। इफ आई फ्लिप फ्रॉम previous to this pose, I can see my body is going up, my shoulder is going up, and my head is going left. So I can see that. सबसे पहले मैं इसकी head की direction पे काम करता हूँ, and then maybe I'll work on the eyes. So these eyes are looking at same position as our last pose. तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसकी की पोजीशन को,
and now I am getting this eye direction correctly. Okay guys, let's try to make this pose over here. इसमें हमारी body overall rotate कर रही है कुछ left. If I try to flip that, I can clearly see body is going rotating left, and my chest is rotating up and left, something like that. My shoulders are going up. Select these guys. इसको rotate करते हैं. Let's flip, double check. Yes, much better. Now I will work on the expression. So right now he is like scared. तो इस expression को हमें exaggerate भी करना है. I will select these controllers over here. Head को deselect करता हूँ. Okay, I will select the head controllers from here and then let's make it 0. Yes. I can see that okay, my neck is going a little back, so let's work on that. इसको bring कर थोड़ा सा पीछे लेके आते हैं. And my head is also going a little down over here. And now I will start working on the eyebrows. Let's select it from here. Eyebrows should be high up. कुछ यूं हो जाएंगे. And they are scared. Maybe bring these guys in a little bit and select these guys and really widen up these eyes. We really want to feel that he's scared. इन सभी कंट्रोलर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ and then make it 0. I don't want to mess up with value they have already. Let's make this guy 0. Okay. अभी हमारा jaw थोड़ा सा ओपन हुआ. Let's open it up. And इसको हम रोटेट कर सकते हैं कुछ लेफ्ट की तरफ. And we can rotate this guy like this. His lower lid will be like this. And then maybe I can rotate head a little more, maybe. Yeah. And I can see my corners are pinching. तो मैं इनको select करता हूँ corners को. And then try to pinch these guys and maybe rotate this guy out. Lower lip is more flexible than upper lip. Puff की वैल्यू को 0 कर देते हैं. Symmetry को ब्रेक करते हैं हम लोग. Let's maybe bring this guy a little down. And maybe this pinching is too much. इसको थोड़ा सा reduce करते हैं. Let's make it 0.5. And we can find out the directionality. As we can see, the head can go a little left. Head को ज़्यादा rotate नहीं करूँगा. Yes, something like that. और इसके nose में symmetry को break करते हैं. उसका lips नीचे जा रहे हैं तो maybe उसका nose थोड़ा सा नीचे जा सकता है. And over here it can go a little up high. I really don't like these teeth over here. इन teeth को adjust करते हैं. Teeth को यहाँ से select करके ऊपर कर देते हैं. Lower teeth we can rotate this guy down maybe. We can move this guy down maybe like this. Yeah. तो हम लोग इस कॉर्नर को सेलेक्ट करके पीछे मूव करने की कोशिश करते हैं या इधर लेके आते हैं. Maybe something like that. Yeah, let's try to break the symmetry. Bring this corner over here maybe. I really try to work on these shapes. They should look very nice. Maybe I can scale this guy up a little bit. And I can 2D zoom by selecting this guy over here
and then I will press backspace and then right click, zoom in. So now I am zooming in without destroying my camera. तो इस पोज पे काम कर रहा हूँ अभी मैं. And let's try to work on this guy. Maybe let's make it 0 for now. Yeah, I think 0 should be better. And same for this guy, upper lip should be 0, lower pinching is fine. Maybe I can increase that, try to increase that. Yeah, 1 is fine. Cool. Let's bring that closer a little bit more. क्योंकि ये करीब आए हैं तो इनकी जो थिकनेस है वो भी चेंज होगी. तो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस थिकनेस ओवर हियर लोअर लिप के लिए. सेम फॉर द अपर लिप, वी कैन चेंज द थिकनेस. Maybe it is too much. 0.5 is okay. Fine. Press this guy and we can scale this down. And we can also see in the perspective view, this is our pose. Yeah, let's try to flip and double check everything is working fine. Maybe I can bring this head a little down more. और shoulders को exaggerate हम लोग कर सकते हैं. And even I can translate these guys. Rotation के अलावा I can go into the word and translate them up a little bit. Yes. So this is our second pose and this one is final pose. And we can still exaggerate this pose by using its neck and head tilt. Yes. And maybe bring this neck a little forward and left maybe. Let's try to flip them again. And maybe you can tilt the head a little down like this. Yes. And maybe over here he is looking down. यहाँ पे eyes को भी हम adjust करेंगे first pose में. As you can see guys, कोई भी pose final नहीं है. I can change it anytime. Don't marry to any pose. You can change it anytime you want to. Let's all the controllers and then we will go to 18 and press S. Now I will try to find more poses, more breakdowns in between these one. So I feel like I really need to add this pose over here. And I will go into this pose and press S. And I can clearly see that this pose is favoring my right pose. And then मैं क्या करूँगा कि maybe 15 से value उठाऊँगा and then I will put into this pose. वो कैसे? मैं 15 पे जाता हूँ and then I will middle click on this key pose and I will press S. अब मैं चेक कर सकता हूँ कि this pose is already picking up the values from this frame. Now I can change on top of that. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Let's try to see. मेरा head नीचे जा रहा है मज़ीद and it is rotating down and I have this compression in the mouth and my mouth position is favoring my previous pose. तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ? I can select these controllers over here. Let's try to make this expression from eyebrows and eyes blink कर रही है हमारी. It will be closing down. Let's select these eyes और इसको हम लोग 0 से start लेते हैं. And then I will really try to work on this pose. Maybe bring this guy up and these eyebrows will go down. इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं. Maybe something like that. I will select these controllers on the mouth
let's make it 0 and I will select the jaw. इसको हम लोग seal करते हैं, make it 1 and then I will try to work on that part and now I will maybe bring this guy. So मैं क्या करता जा रहा हूँ, इस pose को थोड़ा सा improve करता जा रहा हूँ by looking कि वो कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है. Let's save the file. Select all, S press किया. Now I have to figure out कि next position कौन सी है जो मुझे चाहिए. Don't worry about the transition for now because I am just looking for the poses over here. Try to find out कि यहाँ तक हमारे पास moving hold है. This is one more pose we need. तो यहाँ पे मैं key करता हूँ and then maybe I will take value from frame number 20 and double click here and then put that value here. And this part will be for moving hold. Moving hold में क्या हो रहा है? The body is going down. So maybe I can bring this guy a little down. I will rotate it a little left. Yes. Maybe this is too much. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ value लेके यहाँ पे डाल देता हूँ. Maybe I can select the body controller and then I will pick this value and then put it here to really reduce that. What else is happening? The head is rotating a little up and right. So I can do that. और jaw थोड़ा सा relax हो रहा है. And jaw is going up. Close हो रहा है, relax हो रहा है. And then later we can add more life to the expression. For now we can add a little bit movement is enough. This guy will come down and this will be something over here. और उसका nose थोड़ा सा relax होगा. Yeah. Something like that guys. हम बाद में इसको change करते रहेंगे. Let's save this guy. सभी कीज को select किया, S press किया. Now I will try to find out my जो final pose है उसके करीब करीब कौन सा pose है. It will be my next pose. तो यहाँ से body यहाँ तक आती है and this pose is almost starting from here. तो यहाँ पे मैं moving hold देख पा रहा हूँ कि this is just the moving hold. There is not much happening pose wise. और ये pose favor किसको कर रहा है? ये last position को ज़्यादा favor कर रहा है. तो मैं यहाँ से value लेता हूँ कोई भी करीब से and middle click करूँगा. I already selected every key. यहाँ पे यहाँ से value ली, middle click यहाँ पे किया and press S. And now I already added some moving hold. I can select head and then this head might. Right now I can see कि eyebrows float कर रहे हैं. Don't worry about that right now. We can always go back and fix that. For now let's select these eyebrows. तो यहाँ से करीब से कोई भी value उठा के यहाँ पे डाल देते हैं. Yes. And now try to find out what happening in the body. Over here I can see this beautiful movement over here where head is rotating left and rotating up but body is going down. इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा फेवर नहीं कर रही राइट पोजीशन को. तो मे बी आई कैन पिक एनी वैल्यू फ्रॉम हेयर एंड देन पुट इट ओवर हेयर. नाउ आई कैन सी आई ऑलरेडी हैड सम मूवमेंट हेयर एंड वी हैव टू वर्क ऑन द हेड बिकॉज हेड इज ऑलमोस्ट लॉक्ड बट टिल्टिंग अ लिटिल बिट. तो यहाँ से राइट से वैल्यू लेता हूँ, हेड में डालता हूँ एंड देन आई हैव टू फिगर आउट के क्या हो रहा है. तो मे बी रोटेशन वाइज कुछ यूं चीज़ें हो रही हैं. एंड आल्सो द शोल्डर्स दे आर गोइंग डाउन. तो मे बी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ शोल्डर्स को. एंड लेट्स मूव दिस गाय अप अ लिटिल बिट.
something like that. But guys, it is not final. These poses, they are just the roadblocks. Cool, let's select all of them and I will key them here. Save this guy. Okay, for play blast purpose, I will just double click, right click, and then I will make the tangent into step mode. And now I can see my key poses over here. इसको सेव करते हैं. And let's make a play blast. I will select this camera, right click over here, play blast की settings में जाते हैं. And then I will double check everything is fine over here. I will say this is my head blocking. And let's make a play blast. Yes, this is our blocking for this animation. हम लोग next time मिलते हैं and then I will go into more details and we will add up more breakdowns and we will go to spline mode और इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे. तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट अपडेट को आप मिस ना कर पाए. ओके गाइस, टेक केयर.